Hello, hello everyone. Am I audible? Hello, just tell me whether I'm audible or not. Am I audible? Quickly share this session with your friends, with your known ones, so that we can start with the session as soon as possible. Come on, quickly share this session with your friends, with your known ones. Am I audible? Whoever is watching, just tell me whether I'm audible or not. Okay, okay. So, hello everyone. We are live again and we are meeting after a long time. So basically, we have completed many chapters in biology. We have completed with the cell, the structure of chromosomes. Then we have also completed the Mendelian genetics. Then the plant physiology and also human circulatory system. For that, what you can do is you can go to our channel and check with the chapters. All the chapters are given in a very sequential manner. Let me also tell you that in this platform of Midha Guru, we are just not providing you the free lectures, but we are also providing you free DPPs, test papers, and primarily the mock test. So what you have to do is you have to go to the Google Play Store and download the app Midha Guru. So as I always say that after you download the app, you have to log in into the app, and after you log in, you can go to the search bar or the search button and type their 10th ICC mock test. All the mock tests are given in a very sequential manner. The questions that have been prepared have been primarily taken from the textbook of your Selena. There are many textbooks for the ICC curriculum, but the Selena publishers are considered to be the most appropriate and most concise book for 10th ICC curriculum. So all the questions that we have prepared, the lines that we have referred to the lines that are given in the textbook itself. So it's very essential that you go and attempt all those mock tests. So it will be helping you in simultaneously preparing for the exams as well. Apart from that, if you have any kind of inquiries, you need any kind of free mentorship or guidance, you can call on this number or also you can WhatsApp us. We will definitely reply you back in within 24 hours. Fine. Now quickly share this session with your friends, with your known ones so that we can start with it. Yeah, come on quickly, start with it. Quickly share this session with your friends, with your known ones. Okay. Anyways, fine. Okay. Let's proceed with the chapter. So today, basically, we are going to start with a new chapter that is the nervous system. Nervous system is also categorized or classified under human physiology itself. We have basically 4 units, 5 units rather, where we have done with the plant physiology. We have also seen the structure of cells, the chromosome, and the Mendelian genetics. Today, we have picked up a chapter which is classified under human physiology, that is the nervous system. Many of you have requested to make a video on sense organs, but I have started with nervous system is because there are few terminologies, there are some basics which you need in the chapter of sense organs. So before you study this chapter, you will be not understanding some terminologies that are given in sense organs. So this is the reason I have picked up this chapter, because the uh,
sense organs, the whole phenomenon, the mechanism of sense organs and the organs, or the whole mechanism which is related to it, is basically related to this nervous system. The whole foundation of this sense organs is laid upon this nervous system itself. So this is the reason I have picked up the chapter nervous system first, and then we are going to see to the sense organs. So what is nervous system? In our human body we have different kind of system: circulatory system, excretory system, then we have this reproductive system, excretory system, digestive system. All these systems are actually, these are actually the filters, or these are actually the, these are the systems which actually helps in the survival of a human body. Okay. uh, Without these systems we cannot survive. Each of the system is actually doing a specific work. Like for example, if suppose a human body does not have a digestive system, then we cannot digest the food. In turn, we will not be able to produce the ATP. So all the systems are actually dependent on each other. And if we are not able to produce the ATP, then we will actually be not able to survive, right? So the process of respiration is basically dependent on the process of digestion. Like if you do not digest the food, then the particles, the molecules will not get into the cell, and won't be any oxidation of the food. Okay, there won't be any oxidation of food. Okay, so what will happen? Just a minute. Yeah, hello. So what will happen? Okay, just let just give me 1 minute. I'm not able to see the chats. Yeah, now it's fine. Okay, so all the system that a human body has is actually, all the systems are actually interdependent. What I mean to tell is all the systems are interdependent. If you lose one system, the other system will also not function properly. Okay, like just now, what example that I have taken is that the process of digestion, if it is not executed properly, then the process of respiration will also not take place properly. So all the system that we have in our body is interdependent. Okay, and each of the system actually has a specific function that, that performs basic, that has some criteria, and they perform basic functions so that the human body can survive, so that we can survive. Fine. So this is the overall mechanism for all the system. Now what happens that we have a system that we call as nervous system, just like we have other system. The nervous system basically helps in coordination and, regulation of everything. This nervous system actually includes, like we have already studied in circulatory system, that the circulatory system includes some components like heart, blood vessels. Without these, we cannot, circulatory system rather cannot be fulfilled. A circulatory system is not a complete system. Similarly, in a nervous system, what comes under these nervous system is our nerves, then comes the neurons. Neurons. Okay, these are the fundamental basic basic units which forms the whole nervous system. Apart from that comes our brain and also the spinal cord. So the principal organs which is involved in the nervous system is the brain and the spinal cord. And neurons are basically the units. Now let me make you understand this. All the organs, all the tissues, all the cells that we are seeing in our body, basically all the organs and the tissues, are made up of small units or building blocks. Without these units or without these building blocks, our system, a whole system cannot be formed. Like we have studied in case of circulatory system. Circulatory system तभी बन पाता है जब छोटे छोटे cells that we called as cardiac cells, when they aggregate together, they form the structure of a heart. Similarly, in case of blood,
Blood is formed of small cells like RBC, WBC, and platelets. All together, they form the blood. Okay. Also, the plasma is also there, obviously. So, what is this cell? We have already studied in the chapter of cell that cell is the structural and functional unit of life. Why do we call it as unit of life? Because each cell contributes in forming a whole structure. We all know that aggregates of सेल के इकट्ठे मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे हमारे टिश्यूज. टिश्यूज से हमारा क्या बनेगा? ऑर्गन्स. एंड फाइनली ऑर्गन से हमारा क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम. एंड अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म बन के तैयार है. बट इफ यू लुक बैक देन द होल thing has been started from a small point that we called as the unit of life, that is our cell. So जो भी हम लोग सिस्टम अपने बॉडी में देख पा रहे हैं, whether we take the circulatory system, whether we take the nervous system, whether we take the excretory system, the digestive system, everything is made up of a cell. वैसे ही जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एक्चुअली कंप्राइजेज द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स प्राइमरीली. लेकिन ये सारी चीजें, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व्स हो गए, ये सारी चीजें एक स्मॉल यूनिट से बनी हुई है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स इज द फाउंडेशनल बेसिस ऑफ द नर्वस सिस्टम. विदाउट दीज न्यूरॉन्स हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट नहीं है. तो जो भी ब्रेन बना है, स्पाइनल कॉर्ड बना है, नर्व्स बने हैं, ये स्मॉल स्मॉल सेल से बने हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं. ठीक है. तो विद दिस वी कैन स्टार्ट आर the basis of our chapter. And before we start and understand the basis of the nervous system, we are going to understand the basis, the foundational structure of a neuron. And this is one of the most important things that we are going to discuss. So this is a neuron. हमें हम सबको ये पता है कि जो भी हमारा सिस्टम है वो हर एक छोटे छोटे यूनिट से बने, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने. इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल. दीज आर द फाउंडेशनल बेसिस ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. तो जो भी सिस्टम बना है हमारे बॉडी में, whether we take an excretory system, digestive system, nervous system, सारे सिस्टम एक छोटे छोटे सेल्स के एग्रीगेट से बनता है. सेल्स जब एग्रीगेट करते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बन के तैयार है. ठीक है. तो दिस इज द फाउंडेशनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन. जो न्यूरॉन होता है वो बेसिकली वी हैव स्टडीड दिस इन आवर जूनियर क्लासेस इवन दैट न्यूरॉन्स आर द लार्जेस्ट सेल्स. जैसे लॉन्गेस्ट सेल, सॉरी आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, these are not the largest, the longest cells. Okay. The largest cells being the ostrich egg. So the neurons have three compartments. We have divided neurons into three compartments. तो कौन कौन से compartments हैं? This is the main cell body. This compartment is the main cell body. This is the cell body. Now this cell body comprises the cytoplasm and the nucleus. Like any other cell, it has cytoplasm and nucleus. Now let me tell you, this cytoplasm is actually granular. Now what do we understand by granular? We have already understood these terms in the chapter of circulatory system when we were studying about granular cells, non-granular cells. I mean the granular type of WBCs and non-granular WBCs. Granules are nothing, small spherical structures that are scattered throughout this cytoplasm. Okay. So the cytoplasm is what? It is granular. Cell body comprises of the cytoplasm and the nucleus inside it. We can see the nucleus inside it. Cell body can be also termed as perikaryon. Perikaryon. This term has been given in your Selena book. Okay, fine. Now what happens कि बहुत बार ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ इस तरह से एक्सटेंड कर जाता है एंड ब्रांचेस के फॉर्म में इलाबोरेटिव वे में ये प्रेजेंट रहते हैं. आम भाषा में ये साइटोप्लाज्म जो है ये स्प्रेड कर जाता है और इस तरह से ब्रांचेस बना देता है, इस तरह से ब्रांचेस फॉर्म करता है. इन ब्रांचेस को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दीज एज डेंड्राइट्स. These are nothing but extensions of the cytoplasm. साइटोप्लाज्म जो है वो एक्सटेंड कर जाता है बाहर की तरफ एंड ब्रांचेस बनाना स्टार्ट कर देता है. दैट वी कॉल्ड एज डेंड्राइट्स.
So these are nothing but cytoplasmic cytoplasmic extensions extensions जो कि ब्रांचेस के फॉर्म में इलाबोरेटिव मैनर में प्रेजेंट रहते हैं. फाइन. सो इफ समबडी आस्क कि क्या डेंड्राइट्स कुछ अलग स्ट्रक्चर है, क्या कुछ अलग यूनिट है, तो नो, it is basically the part of the cell body only. Cell body से जब cytoplasm, we all know that cell body is made up of cytoplasm and nucleus. Fine. ये साइटोप्लाज्म जब बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हैं या बाहर की तरफ एक्सटेंड या बाहर की तरफ इलाबरेट हो गए हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? वी कॉल देम एज डेंड्राइट्स. और ये ब्रांचेस के फॉर्म में अरेंज्ड है, ये नेटवर्क्स के फॉर्म में अरेंज्ड है. वी कॉल देम एज डेंड्राइट्स. फाइन. वी कॉल देम व्हाट? वी कॉल देम एज डेंड्राइट्स. नाउ एक लंबा सा लॉन्गिट्यूडनल प्रोसेस इमर्ज होता है फ्रॉम द सेल बॉडी. this long process this long process or longitudinal extension, we call this as axon. I'm writing the axon here because we have to see many things inside this axon as well. ठीक है. तो ये हमारे तीन components हो गए या तीन parts हो गए, three basic parts. These are, ma'am, doubt? Yes, please ask me the doubt. Whoever is having a doubt, please ask me. Okay. So these are the three basic components or areas or subparts of a neuron: the dendrites, the cell body, and the axon. Fine. Now, uh, there is a term dendron. Dendron is actually a singular. Okay, the word dendron, we take it or we consider this for singular purpose. Okay, when we have many dendrons together, many branches together, we call them as dendrites. Okay, तो ये तीन हमारे कंपार्टमेंट्स हो गए या फिर ये तीन सब पार्ट्स हो गए. नाउ वी आर गोइंग टू लुक. मैम, आई डिडंट अंडरस्टैंड बॉडी लाइक द फंक्शन ऑफ इट. सी, the basically what happens, you might be knowing, whoever is asking this thing, you might be knowing that every cell is made up of cytoplasm and nucleus inside it, right? If you are specifically talking about or asking about the function, then you might be knowing that inside cell there are many organelles, right? There are many organelles: the mitochondria, the lysosome, the endoplasmic reticulum, and all other essential lysosomes, all other essential organelles. So this is a cell. Okay, this is a cell. It will perform all the basic functions that a cell performs. ये कुछ अलग से ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है कि कुछ अलग से इसका फंक्शन है. जस्ट लाइक एनी अदर सेल, जो जितने भी ऑर्गेनल्स है इसके अंदर, जितने भी ऑर्गेनल्स एम्बेडेड है इनसाइड द साइटोप्लाज्म, they will perform their own function for the growth, for the development, for the survival of the this neuron. Fine. कुछ अलग से नहीं. Yes, there is a point. There is one organelle which is not present inside the cell body, is centrosome. Is centrosome. Now, we have already studied this thing in the chapter of cell, right? That centrosomes are exclusively found in animal cells. But still, here in case of neurons, there is no centrosome. Centrosome is primarily related with the function of cell division. Okay, centrosome is one of the contributing organelle which helps in the division of cell. So what happens that neurons never divide. Once they have died, they are out of the frame. Okay, they are out of the frame. Uh, New neurons cannot be formed from the existing neuron. Okay, so inside a neural cell, inside a neuron, there is no centrosome. If it is asked in the examination that which cell is not present inside a neuron, then centrosome is not present inside a neuron. Why? Because neurons cannot divide any further. Fine. Neurons cannot divide any further. Fine. We have come to this thing. Now let's talk about the axon. Axon is nothing but a long tubular, long extension which arises from the cell body. Fine. Now this axon is protected or enveloped with some insulating membranes. Insulating membranes. Now the picture is not that prominent here, but I'm just trying to draw it here. There are some membranes or a sheath. Some people get confused with two terminologies.
One is sheath and the other one is sheet. Sheet is a piece of paper. Okay, sheet is a piece of paper or lay of something. Sheet is covering. Sheet is covering. There is a covering or a sheet which we called as myelin sheet. Myelin sheet that actually envelops the whole axon throughout. Okay, it actually envelops the whole axon throughout. The sheet is called as myelin sheet. Fine. This there are like I can draw it this way since the picture has not been uh, demonstrated prominently. So these are what myelin sheet. Now there are certain gaps. Okay, there are certain gaps between two myelin sheet. These gaps, the notch where we can see these gaps are called as nodes of Ranvier. So if it is being asked in the question that what do you understand by nodes of Ranvier, so these are the consecutive gaps between two myelin sheet. ओके, दो माइलिन शीट है, उनके बीच में एक स्मॉल गैप, उस स्मॉल गैप को हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर. वी कॉल दैट गैप एज नोड्स ऑफ रैनवियर. नाउ लेट मी आल्सो टेल यू दैट ये जो माइलिन शीट है ये फर्दर एनवलप्ड है, ये फर्दर एनवलप्ड है by another membrane, by another membrane, by another membrane. This we called as neuro or neurilemma. Neurilemma. Okay, so let me tell you that axon is actually enveloped by sheet that we called as myelin sheet. These are insulating sheets. Okay, these are insulating sheets. Now let me take an example. जैसे हम लोग के घरों में जो वायर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, कॉपर वायर होता है, राइट, कॉपर वायर. एंड उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग कवरिंग लगाया जाता है. जस्ट लाइक दैट एक्सॉन के बाहर भी एक इंसुलेटिंग शीट है, एक कवरिंग है या फिर एक एनवलप है जिसे वी कॉल्ड एज माइलिन शीट. नाउ बिटवीन टू माइलिन शीट देयर आर स्मॉल गैप्स दैट वी कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनपियर. एंड ये माइलिन शीट फर्दर कवर्ड है या एनवलप्ड है विद अनदर काइंड ऑफ मेम्ब्रेन और शीट दैट वी कॉल्ड एज न्यूरिलेमा. Fine, न्यूरिलेमा. Now let's come to the last point or the last tip of this neuron. ये जो ब्रांचेस हम लोग देख सकते हैं, these are nothing but the nerve endings. These are nothing but the nerve endings. These are nerve endings. Fine. Now these nerve endings are also called as axon endings. Why? Because the axon are getting the terminal point. This is the terminal point of the axon, so we are calling it as axon endings as well. Now these axon endings are little bit swollen. Again, the picture is not that prominent. I'm drawing it for you. They have swollen ends like this. The axon endings have swollen ends like this. Yeah, you can see here the swollen ends. These are called as synaptic bulbs. Synaptic bulbs. These are called as synaptic bulbs. Okay. Now what happens inside these synaptic bulbs? There are some chemicals. There are some chemicals that we called as neurotransmitters. Neurotransmitters. We call that as neurotransmitters. The most famous neurotransmitter that has been mentioned in your book is acetylcholine. Acetylcholine. Now we are going to discuss that later on. So what are neurotransmitters? These are nothing but the chemicals. Okay, these are nothing but chemicals. Like we know that in our whole human body, we don't have just one neuron. We have many neurons, millions and billions of neurons. Okay, so if if a neuron, suppose if I'm drawing it in a rough way, suppose if I have a neuron like this, the cell body, the dendrites, and this is the axon and the axon ending. Now, if this neuron has received some kind of message or some kind of impulse, so what is impulse that we are going to discuss later? This is nothing but the electrical messages. Okay, just suppose एक neuron है, this is one neuron, it has received some kind of stimulus. अब ये जो मैसेज है वो दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करना चाहता है या दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करना चाहता है. तो हाउ विल इट ट्रांसमिट दीज मैसेजेस? तो वो क्या करता है, इसके एंड में जो इसका एक्सॉन एंडिंग्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये स्वेलन होते हैं.
इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक बल्ब बोलते हैं। इन्हीं साइनेप्टिक बल्ब के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ नहीं, नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूरॉन कुछ केमिकल्स यूज करते हैं ताकि वो मैसेजेस को ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन कि इस न्यूरॉन के पास किसी तरह का मैसेज आया, इट विल गो टिल टू द एक्सॉन एंडिंग, एंड जैसे ही उसे इम्पल्स रिसीव हुआ, ये जो साइनेप्टिक बल्ब है ये रप्चर हो जाते हैं और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये क्या करते हैं, इन केमिकल्स को वो रिलीज कर देते हैं ताकि जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसे वो क्या कर सके, इस इम्पल्स को या इस मैसेज को वो कैरी फॉरवर्ड कर सके या रिसीव कर सके। फिर इस न्यूरॉन से इसके पास गया, इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास, एंड सो ऑन। इस तरह से एक सीरीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स पास ऑन होते जाते हैं एंड फाइनली हमारे ब्रेन या हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है ताकि हम लोग चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकें कि व्हाट काइंड ऑफ मैसेजेस, व्हाट काइंड ऑफ स्टिमुलस, या फिर क्या बॉडी हमारा डिमांड कर रहा है। ठीक है, सो न्यूरोट्रांसमीटर्स आर नथिंग बट दीज आर केमिकल्स दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन। ठीक है, ताकि चीज़ें इम्पल्स ट्रांसमिट हो सके। So this is the overall idea of a nervous system. Okay, and this is the basic structural unit of the nervous system which we called as neuron. Okay, so neuron is divided into three parts. One is the cell body, the primary part which we called as perikaryon. बहुत बार साइटोप्लाज्म एक्सटेंड हो जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स, जो कि ब्रांचेस के फॉर्म में अपीयर होते हैं। Now there is a long extension that we called as axon. Axon has uh, is been enveloped by an insulating sheath that we called as myelin sheath. दो माइलिन शीट के बीच में एक छोटा सा गैप होता है that we called as nodes of Van Leer. Now these myelin sheet are further, enveloped by another sheet or membrane which we called as neurolemma. नाउ जो एक्सॉन का एंड होता है उसे हम लोग नर्व एंडिंग्स भी कह सकते हैं, एक्सॉन एंडिंग्स भी कह सकते हैं। दीज एक्सॉन एंडिंग्स आर एक्चुअली स्वेलन होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्टिक बल्ब्स कहते हैं। और इन्हीं साइनेप्टिक बल्ब्स के अंदर क्या रहता है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स। these are nothing but the chemicals which helps in the transferring of messages from one neuron to another neuron. ठीक है, जो मोस्ट फेमस बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमीटर दैट हैज बीन गिवन इन योर बुक और इन योर करिकुलम इज एसिटाइल कोलिन, इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक डन है। यहाँ तक इफ एनीबडी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट वन कैन आस्क। ओके, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट वन कैन आस्क। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो ये हमारा एक ओवरऑल आइडिया था। आई हैव पुट अ ब्लैंक स्लाइड सो एज टू tell you the whole mechanism. Uh, so what we have discussed, suppose this is one neuron, suppose this is the dendrite, this is the cytoplasm, and this is the nucleus, and we have an axon. There is an axon ending. So at each axon ending, the axon endings are actually swollen. These are swollen endings of axon, which we called as synaptic bulb, right? अब होता क्या है कि ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, these dendrites actually receives the stimulus. So what is stimulus? Stimulus is any change in your environment. Okay, any change in your environment. Suppose मैं अच्छी भली खड़ी हूँ, अचानक से if my hand goes and touches a hot cup of coffee, okay, तो obviously मैं उसे पकड़ के खड़ी तो नहीं रहूंगी, I will remove my hand. Okay, I will remove my hand away from that. So that change in my environment, I was normally sitting at one place, लेकिन अचानक से वो जो change आया, अचानक से मैं जो हाथ हटाई, अचानक से जो वो एक that fear प्रोड्यूस हुआ मेरे अराउंड, तो वो जो अचानक से चेंज आ रहा है इन्वायरमेंट में, दैट इज एक्चुअली नथिंग बट स्टिमुलस। दैट इज स्टिमुलस। ओके फाइन। तो स्टिमुलस को रिसीव कौन करता है, उस स्टिमुलस को सबसे पहली बार रिसीव कौन करता है, दैट इज रिसीव्ड बाय द डेंड्राइट इटसेल्फ। डेंड्राइट्स क्या थे, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। अब ये डेंड्राइट्स क्या करता है, सेल बॉडी को मैसेज भेजता है, सेल बॉडी से एक्सॉन में मैसेजेस जाता है एंड फाइनली वो एक्सॉन टर्मिनल तक मैसेजेस पहुंचाता है। एक्सॉन टर्मिनल जो होते हैं, उनका जो टर्मिनल्स होता है, एक्सॉन के जो टर्मिनल्स होते हैं वो स्वेलन होते हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक बल्ब। और इन्हीं साइनेप्टिक बल्ब के अंदर क्या रहता है, हमारा न्यूरो रहते हैं। ये क्या रहते हैं, न्यूरो रहते हैं।
these are nothing but these are the chemicals. These are the chemicals जो क्या होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होते हैं so as to transfer the messages एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक और फाइनली वो कहाँ जाता है वो ब्रेन तक पहुँचता है स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचता है फाइनली सॉरी रिस्पॉन्सेज हम लोग जनरेट करते हैं अकॉर्डिंगली फाइन रिस्पॉन्सेज हम लोग जनरेट करते हैं अकॉर्डिंगली तो ये है ओवरऑल आइडिया एंड व्हाट हैपेंस कि एक दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे एक दूसरा न्यूरॉन है अब होगा क्या कि जितने भी इम्पल्सेस वो रिसीव किया था फर्स्ट न्यूरॉन द इम्पल्सेस दैट वर सॉरी द स्टिमुलस दैट वाज रिसीव्ड बाय द फर्स्ट न्यूरॉन वो किसको कन्वे किया दैट वाज रिसीव्ड बाय द डेंड्राइट्स देन इट वाज कन्वेड टू द सेल बॉडी फाइनली एक्सॉन और फाइनली एक्सॉन एंडिंग तक अब होता क्या है कि जब तक मैसेजेस नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करता है न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करता है then this is actually in the form of electrical this is actually an electrical impulse ठीक है ये क्या है एक इलेक्ट्रिकल मैसेज ये क्या है इलेक्ट्रिकल मैसेज के फॉर्म में ये ट्रांसफर करता है ट्रांसफर होता है जब तक वो न्यूरॉन्स के बॉडी के थ्रू आउट ट्रांसमिट हो रहा है बट वंस इट हैज कम टू द एंड पार्ट और द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सॉन जिसे हम लोग क्या कहते हैं साइनेप्टिक बल्ब वो क्या हो जाता है ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना ये केमिकल इम्पल्स में ट्रांसफर हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है एंड जो दो न्यूरॉन्स हमें दिख रहे हैं दिस इज द फर्स्ट न्यूरॉन एंड दिस इज आर द सेकेंड न्यूरॉन तो इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटा सा गैप होता है दिस वी कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट और गैप क्लेफ्ट इज नथिंग बट अ गैप स्मॉल गैप को हम लोग क्या कहते हैं क्लेफ्ट कहते हैं जैसे ही द थ्रू आउट द न्यूरॉन जो मैसेजेस ट्रैवल होती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही ट्रैवल होती है बट वंस इट हैज रीच द एक्सॉन टर्मिनल वो क्या होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सॉरी केमिकल इम्पल्सेस में नाउ व्हाट हैपेंस ये जो साइनेप्टिक बल्ब है ये रप्चर करते हैं इनके बेसिकली होता है क्या है जो साइनेप्टिक बल्ब है इनके अंदर भी छोटे छोटे वेसाइकल्स है वेसाइकल्स आर नथिंग बट स्मॉल बैग ओके स्मॉल बैग और इन्हीं वेसाइकल्स के अंदर होता है हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर्स दीज आर नथिंग बट द केमिकल्स जैसे ही इम्पल्स इन्हें रिसीव जैसे ये इम्पल्स को रिसीव करता है तो ये जो वेसाइकल्स है ये रप्चर कर जाता है रप्चर यानी कि इस तरह से बर्स्ट कर जाते हैं और ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रिलीज कर देते हैं अब जैसे ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुआ जो नेक्स्ट एडजेसेंट न्यूरॉन है वो क्या करेगा डेंड्राइट्स के थ्रू इन सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रिसीव करेगा एंड फर्दर वो क्या करेगा सेल बॉडी को भेजेगा सेल बॉडी से एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल एंड फाइनली साइनेप्टिक बल्ब अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव किया द द टाइम इट विल पास थ्रू आउट द सेल बॉडी जब तक वो न्यूरॉन के थ्रू पास कर रहा है इम्पल्स वो किस फॉर्म में रहता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहता है जैसे ही वो लास्ट दैट इज द टर्मिनल पॉइंट ऑफ एक्सॉन में आता है वो केमिकल इम्पल्सेस में चेंज हो जाता है एंड दीज आर नथिंग बट द न्यूरोट्रांसमीटर्स फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वेसाइकल स्ट्रक्चर करेंगे फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में पास होगा फिर थर्ड से फोर्थ न्यूरॉन में फोर्थ से फिफ्थ न्यूरॉन में इस तरह से मैसेजेस या इम्पल्सेस पास ऑन होते रहते हैं ठीक है तो ये है ओवरऑल आइडिया ऑफ नर्वस सिस्टम फाइनली ये सारे इम्पल्सेस सारे मैसेजेस हमारे ब्रेन या हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है एंड हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बॉडी को किस तरह से रिस्पॉन्स करना है या करवाना है ठीक है now let's come to next slide now before we start with the chapter there are certain terms small terms जो कि हम लोग already class 8 में when we were in standard 8 we have already studied all these terms but to we need a revision of all these terms so let's take a little bit and just revise these terminologies so first what is stimulus what is stimulus any change in the environment any sudden change in the environment is nothing but a stimulus so I'm just writing in a very short way okay any sudden change in the environment is nothing but a stimulus जैसे मैं अच्छी भली खड़ी हूँ अगर मेरा हाथ किसी गर्म कप के कॉफी में जाके टच हो गया तो व्हाट आई विल डू आई विल रिमूव माय हैंड ओके तो वो जो एक चेंज आया that change is actually a stimulus response is what the action that we are performing against that stimulus
ऑब्वियसली अगर कुछ हो रहा है हमारे एनवायरमेंट में चेंज, तो वी रिएक्ट टू दैट चेंज, राइट? वी डू नॉट सिट आइडल और वी जस्ट गेज इट अप। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो सॉरी जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज नथिंग बट आर रिस्पॉन्स। ओके, सो द एक्शन परफॉर्म्ड against the stimulus, it's nothing but the response. Now there are two more terms, receptor and effector. रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो रिसीव करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, रिसेप्टर्स आर नथिंग जो इम्पल्सेस को रिसीव करें। Now before I just get into these terms, I would like to just tell you that what is an impulse. Impulse कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रिकल मैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। बेसिकली जो हम लोग अभी जस्ट पिछले स्लाइड में पढ़े कि जो मैसेजेस है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, एक वेव लाइक ट्रांसमिशन बनता है, ठीक है, एक वेव लाइक ट्रांसमिशन बनता है। एंड इसी इलेक्ट्रिकल वेव लाइक ट्रांसमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ, या फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म, ओके, इलेक्ट्रिकल मैसेज को हम लोग क्या कहते हैं, we called it as impulse, fine, we called it as impulse. So receptor is nothing, the epithelial cell, जैसे just now the example that I have taken, अगर मेरा हाथ किसी गर्म कप की कॉफी में जाके टच हो जाता है, तो the epithelial cell, okay, the skin cell or the epithelial cell which will be in contact with that stimulus, वो क्या करेगा, उस impulse को वो receive करेगा, उस impulse को वो क्या करेगा, receive करेगा, so that will act as my receptor। okay, so I am just writing here epithelial cells, epithelial cells that receives that receives the stimulus and convey, बस रिसीव ही नहीं करता है brother, and convey the message or the impulse to the brain or the spinal cord, right, to the spinal cord। तो ये क्या है, ये है रिसेप्टर, ठीक है, ये रिसेप्टर हो गया। ना व्हाट इज इफेक्टर, तो व्हाट इज इफेक्टर, अब रिसेप्टर क्या क्या, स्टिमुलस को रिसीव किया, उसको भेजा कहाँ तक, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजा। ना ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द सीपीयू, ठीक है, ये क्या है, हमारे बॉडी का सीपीयू है। ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा चीज़ों को, ये क्या करेगा, चीज़ों को प्रोसेस करेगा कि अच्छा हाथ हटाना चाहिए कि नहीं, किस तरह का एक्शन करना चाहिए, किस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए, एवरीथिंग। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेट्स एवरीथिंग। अब कोऑर्डिनेशन के बाद, इंटरप्रिटेशन के बाद, अब हमें रिस्पॉन्स भी तो प्रोड्यूस करना है, हाथ हटाना भी तो। मैं समझ गई कि हाँ, आई हैव पुट माई हैंड्स ओवर अ हॉट कप ऑफ कॉफी, बट आई हैव टू रिमूव माई हैंड्स ऑल्सो ना। तो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो मसल्स होते हैं, हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, वो इफेक्टर जैसा काम करते हैं। इफ आई एम रिमूविंग माई हैंड, माई मसल्स आर एक्चुअली वर्किंग, okay, my muscles are actually into the role. So effector are nothing but muscles or glands, or glands which produces produces an response, produces a response, just a minute, which produces a response, ओके okay? और ये क्या करेगा, ये सारे मैसेजेस को कहाँ से कहाँ कन्वे कर रहा है, फ्रॉम ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड टू टू muscles or glands, fine। So this was the whole idea, this was the whole idea of these terminologies। Now let's come to synapse। So what is synapse, synapse कुछ नहीं, small gap। Now before we understand synapse, let's understand the membrane। हम लोग इस इमेज में देख सकते हैं, if you see it carefully, this is one neuron, this is the first neuron and this is the second neuron,
फाइन. फर्स्ट न्यूरॉन स्टिमुलस जब रिसीव करता है, इट रिसीव्स विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करता है, एंड देन इट ट्रांसफर्स द इम्पल्सेस और द मैसेजेस टू द सेल बॉडी. फाइनली वो एक्सॉन से ट्रैवल होके एक्सॉन एंडिंग तक जाता है, एंड एक्सॉन एंडिंग में जाके वो क्या करता है, न्यूरो रिलीज करता है. नाउ ये जो न्यूरो रिलीज हुए, ये क्या करेंगे, ये फर्दर नेक्स्ट न्यूरॉन के पास जाएगा, एंड नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स होता है वो इन न्यूरो को रिसीव करता है. इन न्यूरो को रिसीव करके वो सेल बॉडी में भेजेगा, सेल बॉडी से फिर से एक्सॉन, एंड एक्सॉन से फाइनली अगेन साइनेप्टिक बल्ब में. तो ये जो एक छोटा सा गैप, इफ यू कैन सी देयर इज अ स्मॉल स्क्वायर मेड हियर, दिस स्मॉल gap is nothing but the synaptic cleft. This is nothing but the synaptic cleft. I'm just writing it here. This is nothing but the synaptic cleft. Synaptic cleft. Cleft is nothing, a small gap. ठीक है, cleft is nothing but a small gap. Now इसी को elaborative way में थोड़ा सा यहाँ पे demonstrate किया गया है. Now this is actually synaptic bulb. Synaptic bulb of the first neuron. इसे थोड़ा सा magnified way में दिखाया गया है. This is the synaptic bulb, and here this is the dendrite. Okay, this is the dendrite of the another neuron. Okay, this is the first neuron जिसका synaptic bulb we can see, and this is the second neuron जिसका ये dendrite है. Now if you can see that synaptic bulb के अंदर ये छोटे छोटे इस तरह से back like structures होते हैं, which we called as vesicles, which we call them as vesicles. Okay, we call them as what? We call them as vesicles. Okay, come on, share this session. Okay, these are what? Vesicles. इन्हीं vesicles के अंदर ये जो small spherical structures देख रहे हैं, these are nothing but these are the neurotransmitters. These are what? These are neurotransmitters. Okay, so once these synaptic bulb receive the stimulus or the messages in the form of impulse, वो क्या करते हैं, synaptic vessels क्या करते हैं, basically vesicles ये rupture हो जाते हैं and neurotransmitters को release कर देते हैं. The dendrite of the another न्यूरॉन, जो डेंड्राइट है, जो दूसरा न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, वी कैन सी दिस विद द पिक्चर, जो स्टिमुलस रिसीव करता है या जो मैसेजेस रिसीव करता है, डेंड्राइट का काम है मैसेजेस रिसीव करना. वो किसका काम है, दिस इज द वर्क ऑफ अ डेंड्राइट. ओके, दिस इज द दिस रोल इज बीइंग प्लेड बाय द डेंड्राइट. तो हो क्या रहा है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है फ्रॉम वन वेसाइकल और वन मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन दूसरे डेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक ये ट्रांसफर हो रहा है. यू कैन सी अ स्मॉल गैप इज देयर. ये जो स्मॉल गैप है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट. साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो व्हाट इज साइनेप्स, साइनेप्स, तो ये जो हम लोग पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज मेम्ब्रेन, दिस इज कवरिंग, दिस इज मेम्ब्रेन. तो ये क्या है, प्री, सॉरी नॉट पोस्ट, दिस इज प्री साइनेप्टिक, दिस इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक. मतलब ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट था, इसके पहले तो प्री हो गया, इसके बाद में तो ये क्या हो गया, पोस्ट. दिस इज एक्चुअली पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री-साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट-साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तीनों को मिला के ओवरऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड एज साइनेप्स. ठीक है, बट दिस इज नॉट बीइंग गिवन इन अ क्लियर मैनर इन योर बुक. सो साइनेप्स को याद रखने के लिए हम लोग ये अभी के लिए याद रखते हैं कि साइनेप्स इज नथिंग बट अ स्मॉल गैप between the two consecutive neurons. Okay, so gap the small gap between between the gap is between which structures, first between the terminal terminal of axons of one neuron, of one neuron. ठीक है, ये जो न्यूरॉन है इसके जो टर्मिनल्स है, ठीक है, इसके बीच में ये जो गैप है, ये एक टर्मिनल एंड दूसरे डेंड्राइट, दूसरे सेल के डेंड्राइट के बीच में जो गैप है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनैप्स. द स्मॉल गैप बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन
and the dendrite of another neuron. This is nothing but synapse. Fine, this is done. Synapse is done. Now let's move to the next slide. Any doubt till here? Whoever is watching, just tell me if you have any kind of doubt or something, you can ask me. If you have any kind of doubt, whoever is watching, if you have any kind of doubt or anything, you can just ask me. Okay, fine. Okay, so I had put a blank slide again just to make you people understand, but it's fine. I think it's already clear by this picture. Now, let's come to types of neurons. So, before we discuss the types of neurons, let's recall a little bit of neurons. What are neurons? Neurons are the foundational basis of the nervous system. Okay, these are the structure and functional unit of life. Okay, without these neurons, the whole nervous system cannot be made. The whole brain, the whole spinal cord is made up of these small cells only, which we call as neurons. The nerve fibers, okay, the long fibers, the nerve fibers, the ganglion, everything is made up of these neurons only. Now, based on their function, we have classified neurons into three types. So first we can say sensory neurons. Then we have uh, associated neurons, associated neurons, or and finally, we have motor neuron. Motor neuron. Now, let me tell you, this association neuron is also named as relay neurons, or it can be also called as interneuron. Interneuron. Why do we call why have we assigned these names to these kind of neurons? We will understand by the function itself. Okay. So first, what is it? This is sensory neuron. By the term itself we can understand that these neurons actually senses, okay, these actually senses the stimulus around it. ठीक है, जो भी हमारे अराउंड चेंज हो रही है, जो भी हमारे अराउंड एक सडन इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, उसको सेंस करने के लिए these neurons are responsible. Okay, so we can say that these neurons actually senses the stimulus and they convey the messages from the receptor to the spinal cord or the brain or the brain. ठीक है, तो जो receptor जैसे just now we have discussed in the in the first I think the yeah in this slide that the epithelial cells, the skin cells that are receiving the stimulus are nothing but our receptor. So receptor receive तो कर लिया but उसे transmit भी तो करना है brain और spinal cord तक, so that our brain and spinal cord can interpret all the things that is going on, right? So who will actually transmit these impulses? This sensory neuron itself. Okay, these sensory neurons itself. Now there is a motor neuron. Once the impulses has reached the spinal cord or the brain, what will happen? The spinal cord or the brain interprets the whole situation. ठीक है, क्या करना है आगे? The brain and the spinal cord will interpret everything. Now interpretation के बाद वापस से जो response create हुआ उसे relay भी तो करना है, उसे convey भी तो करना है to our muscles or gland. So that is being done by this motor neuron. We can say they convey or transmits the impulses from the brain or the spinal cord to the muscles or glands, which will produce the response, which we called as effectors. Okay, now what are these association or relay or interneuron? Now let's understand by a small diagram.
This is suppose the sensory neuron. This is the sensory neuron. Okay, this is the sensory neuron. It is bringing the impulse to the brain or the spinal cord. Suppose, let's draw, this is a section of a spinal cord. Okay, this is a section of a spinal cord. Okay, and once the spinal cord has processed everything, this will again transmit. This will again, uh, the impulses or the messages will again get conveyed from spinal cord to the effector muscle. So this is the receptor. This is the receptor which has received the stimulus. The stimulus has been conveyed or has been transmitted through the sensory neuron. Then this motor neuron actually transmits the impulses or the processed thing, the processed interpretation to the effector तक पहुंचाता है ये. ठीक है. But what happens inside this spinal cord? The spinal cord or the brain has some interneurons or association neurons. These are small neurons. These are small neurons, and these are half sensory. Okay, these are partially sensory in function, and these are half motor in functions. Motor in function, and this is the reason I have drawn this way: half way sensory and half way motor. These are nothing but our association neuron. These are nothing but our association neuron. Now, why are we calling these as association? Because if you, by the picture, we can clearly understand that these are actually associating the sensory neuron and the motor neuron together. Okay, मतलब sensory neuron जो भी impulse लेके आ रहा है, जो भी message लेके आ रहा है, उसे वो क्या कर रहा है, associate करवा रहा है motor neuron के साथ. What happens, जैसे if I put my hand over the cup of a uh, over a hot coffee cup, ठीक है, तो मैं ये सोचूंगी तो नहीं ना, मैं ये सोचूंगी तो नहीं कि मुझे हाथ हटाना है कि नहीं. All these things, all these actions are performed within second or less than seconds. तुरंत से मेरा हाथ जाएगा, तुरंत से मैं हटाऊंगी अपने हाथ को वहां से. ठीक है, मैं सोचूंगी नहीं कि मैं अपना हाथ हटाऊं कि नहीं हटाऊं. तो ये जो पिको सेकेंड्स के अंदर, ये जो विद इन सेकेंड्स के अंदर जो एक्शन रिएक्शन सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, दीज आर एक्चुअली डन बाय दिस एसोसिएशन. अब होता क्या है, सेंसरी जैसे ही आया, तुरंत से प्रोसेस हुआ और तुरंत से वो मोटर के थ्रू चीज़ों को या मैसेज को भेजने का कोशिश किया. ठीक है, इट डज नॉट टेक मच टाइम. जैसे सपोज इफ यू आर क्रॉसिंग फुटपाथ, ओके, और इफ यू आर क्रॉसिंग अ रोड, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यू आर क्रॉसिंग एंड अचानक से एक गाड़ी हमारे सामने से पास हुआ. तो सडनली व्हाट वी डू, वी पुल आवरसेल्व्स बैक. वी डोंट थिंक कि खुद को पीछे लाना है कि नहीं. while we blink our eyes, okay, while we blink our eyes, it takes around seconds. तो all these things are basically done by the brain or the spinal cord. तो ये जो इतना तुरंत से सारे reactions हो रहे हैं, इतने तुरंत से जो responses produce हो रहे हैं, which is occurring within seconds or even less than seconds, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि association neurons क्या कर रहे हैं, जैसे ही these are actually half sensory and half motor, जैसे ही sensory neuron messages को ले आ रहा है, तुरंत से प्रोसेस होने के बाद वो मोटर के फॉर्म में वो क्या कर रहा है, चीज़ों को कन्वे कर दे रहा है. ठीक है, so within seconds everything is taking place. Within seconds everything is taking place. So this is actually what this is: partially sensory and partially motor. Fine. ठीक है, these are also called as interneuron. Why? Because these are acting as an intermediate functions. Okay, these are entities. These are actually acting as intermediate entities. Intermediate मतलब बीचों बीच. Fine. And these are also called as relay neurons. Fine. Fine. तो ये था हमारा overall idea of types of neurons. Any doubt till here? Oh, fine. Let's move to the next slide. What is reflex action? Okay, what is reflex action? Reflex action, if I make you understand by an example, like we blink our eyes. Okay, this is an reflex action. Okay, suddenly we just now I have taken an example of while we while we are crossing the road, suddenly a train, sorry, a bus or any vehicle passes by. Then what we do, we pull ourselves back. ठीक है, तो ये भी क्या है, एक reflex action. Within seconds, like if we are getting hit with something, we say ouch. So that ouch thing is actually a reflex that is being conveyed by a sound, but that the thing that we suddenly pull our hand back, that is nothing but a reflex action.
And all these actions are actually what? Involuntary. These are not primarily under our control. Okay? Suddenly, even uh, even before you think, you perform that action. Okay, even before you think, you perform that action. Now there's a thing. This reflex action is primarily monitored by the spinal cord. Okay, if somebody asks you that whether this all the actions in our body, all the primary functions is performed by the brain itself. But if I talk specifically about this reflex action, then this is being done by the spinal cord. The primary organ which is involved in the execution of a reflex action, it is spinal cord. तो अगर कभी भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि this reflex action is monitored by which organ, then this is actually the spinal cord. Fine, this is actually the spinal cord. Now let me explain you this way. What is reflex action? This is a fast, sudden. Okay, this is a fast, sudden, automatic, automatic, like the blinking of our eyes. Even if we try to control our eyes for some time, it will again start automatically blinking. Okay, so reflex action is nothing. This is a fast. Let me write it with another color. Yeah, this is fast, sudden, and automatic. Automatic. I'm just underlining this word so as to emphasize that this is automatically being processed. Okay, automatic, involuntary, involuntary action which is which is performed. Just a minute. Which is performed in response to the stimulus. स्टिमुलस के अगेंस्ट जो भी सडन, अचानक से, ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन. Two things that we need to keep in our mind, that this is primarily coordinated by spinal cord, and this is an involuntary action and automatic. Fine. This is involuntary, this is automatic, and this is coordinated primarily by spinal cord. What are some of the examples? What examples can we document here for reflex action? जैसे blinking, अचानक से, these are done within seconds. Blinking of eye. Okay. Then knee jerk phenomenon. Knee jerk phenomenon. Like if your knee get hit by some solid substance or some tough thing, then what you do? You pull your knee backwards. Okay, that is also done within seconds, and that is also automatic. You don't think. If you get hit by something, you don't think for some time that whether I need to remove my hand or whether I remove that particular part of my body. That happens automatically even before you start thinking. Okay, even before you start thinking. Fine. ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन. तो व्हाट इज रिफ्लेक्स? ये जो रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म हो रहा है हमारे बॉडी में, दिस इज एक्चुअली डन बाय एन ऑर्गेनाइज्ड पाथवे. ओके, ये जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन हमारे हमारा बॉडी परफॉर्म करता है, दिस इज बीइंग डन बाय अ प्रॉपर पाथवे. ओके, दैट इज डन बाय अ प्रॉपर पाथवे, by an organized pathway. Now let's understand, though we have understood everything, now let's just understand it in an organized manner. Now what happens? This is a candle. I just want to explain you with the help of this diagram. This is a candle. This is what? This is our stimulus. Okay, stimulus. Now suddenly अगर किसी का हाथ कैंडल के ऊपर इस तरह से प्लेस हो गया, what the person will do? He will try to remove his hand. He will try to remove his hand. Now this stimulus is received by the receptor. तो ये जो cells है, जो skin के cells है, epithelial cells है, these are nothing but the receptor. It is the receptor. Now the stimulus will be received by the receptor and it will be conveyed by the type of neuron. Just now we have studied. This is the sensory neuron. Sensory neuron.
The sensory neuron will convey or transmit the messages from the receptor which has received the stimulus to the spinal cord. This is the section. This is an section of a spinal cord. Okay, this is what? This is a section of a spinal cord. Now, why have we taken the section of a spinal cord? Because during reflex action, स्पाइनल कॉर्ड ही प्राइमरी ऑर्गन है जो सारी चीजों को रेगुलेट कर रहा है, पूरी चीजों को रेगुलेट कर रहा है. ओके, सो दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन. नाउ लेट्स कम टू हियर. दिस इज व्हाट? दिस इज द एसोसिएशन न्यूरॉन और द रिले न्यूरॉन. ओके, दिस इज द एसोसिएशन न्यूरॉन. दिस इज द एसोसिएशन और द रिले न्यूरॉन. Relay neuron, which is also called as interneuron even. I don't have space, so I'm not writing it here. Okay, now रिसेप्टर क्या किया? स्टिमुलस को रिसीव किया. दिस वाज कन्वेड और ट्रांसमिटेड बाय द सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन जाके स्पाइनल कॉर्ड को ये सारे मैसेजेस भेजा. स्पाइनल कॉर्ड क्या किया? प्रोसेस किया. सॉरी, या स्पाइनल कॉर्ड क्या किया? ये सारी चीज़ों को प्रोसेस किया. दिस इज द सीपीयू ऑफ आवर बॉडी. एंड ये जो न्यूरॉन है, एसोसिएशन न्यूरॉन, what function does it perform? It is half sensory, this is partially sensory and half partially motor. So that जैसे ही impulse आए वो तुरंत से प्रोसेस करके मोटर के थ्रू वो भेजते हैं. ठीक है, विद इन सेकेंड्स. ठीक है, जितने भी एक्शंस होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन विद इन सेकेंड्स होता है ये सारा चीज. नाउ व्हाट विल हैपन? दिस इज व्हाट? दिस इज मोटर न्यूरॉन. दिस इज द मोटर न्यूरॉन. एंड ये मोटर न्यूरॉन सारे मैसेजेस को, सारे इंटरप्रिटेशंस को किसके पास भेजेगा? This will send to the effector muscle. And finally what will happen? Suppose if I touch the candle, my finger touches the candle, the sensory neuron will carry these impulses to my spinal cord. The spinal cord will process everything, and finally the association neuron will automatically change everything into motor, pass everything to the motor without wasting any time, within seconds, in fact within seconds. Okay, less than seconds. And motor neuron will now convey all these interpretations to the effector muscle. And finally मैं क्या करूँगी? मैं अपना हाथ हटा लूँगी. Okay, so if you see it carefully, then this whole organized pathway is in the form of an arc. It is form of an arc, right? This is this whole pathway is actually in the form of an arc. So we called it as reflex arc. The function, the action that will be performed will be an reflex action. The pathway that is followed is in the form of an arc. इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? Reflex arc कहते हैं. Any doubt still here? Any doubt still here? मैम कौन सा बोर्ड्स पढ़ा रही है? I am teaching ICSE board. Okay, 10th ICSE. This chapter belongs to 10th ICSE. Fine? ठीक है? Let me repeat it again. First क्या है? Stimulus. Stimulus is what? The candle is here. The candle is our stimulus here. Stimulus जैसे ही कैंडल है, अगर गलती से if I put my hands over that candle, तो जो रिसेप्टर मसल है what will that do? That will receive the stimulus. और वो क्या करेगा? सेंसरी न्यूरॉन के पास वो भेज देगा. Now this sensory neuron has sensed the stimulus और वो क्या करेगा? स्पाइनल कॉर्ड के पास भेज देगा. स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? सीपीयू का काम है, यानी कि चीज़ों को प्रोसेस करने का काम है. इट विल प्रोसेस द होल थिंग कि किस तरह का एक्शन परफॉर्म करना है, कोऑर्डिनेट करेगा, चीज़ों को इंटरप्रेट करेगा कि हुआ क्या है. देन इट विल एक्चुअली प्रोसेस एवरीथिंग. और फाइनली मोटर न्यूरॉन क्या करता है? इफेक्टर मसल तक मैसेजेस को रिले कर कन्वे करता है. एंड फाइनली इफेक्टर मसल एक्शन परफॉर्म करता है. और जो एसोसिएशन न्यूरॉन है दैट इज पार्शियली सेंसरी एंड पार्शियली मोटर. एज आई हैव ऑलरेडी सेड व्हाई इट इज पार्शियली सेंसरी एंड पार्शियली मोटर, क्योंकि जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन चीज़ों को लेके आया, इम्पल्सेस को लेके आया, तुरंत से वो प्रोसेस करके मोटर के पास भेज दे. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तुरंत से एवरीथिंग शुड हैपन विद इन सेकेंड्स और लेस दैन सेकेंड्स. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज the action that will be performed is an reflex action. Why? Because this is automatic, this is fast, and this is involuntary. Okay, why how can I claim this action as a reflex action? If it is fast, if it is automatic, if it is sudden, and if it is involuntary, okay, then I can say yes that this is what? This is an reflex action. This is what? This is a reflex action. Fine. Now the pathway, the organized path that it has followed is in the form of an arc. ये एक arc के form में है. So we are calling this as reflex arc. We are calling this as reflex arc. Let's document them.
in the flow chart. जब भी हम लोग एग्जामिनेशन में चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन एग्जामिनेशन दो तरह की चीजें पूछे जा सकते हैं. आइदर इट कैन कम आइदर इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम. अगेन द होल डायग्राम, यू विल बी नॉट आस्क्ड टू ड्रॉ द होल डायग्राम. ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम होता भी नहीं इतना डायग्राम बनाने का. ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम. So definitely the board will not ask you to draw the whole diagram. Yeah, it may ask you to label the essential elements, but yes, it will not ask you to draw the whole diagram. Okay, you have to but properly see the labelings. Fine. Now whenever we explain the reflex arc, अगर reflex arc define करने आ गया exam में, we are going to define it in the form of a flow chart. Okay, what are we going to do? We are going to define it in the form of a flow chart. So flow chart की form में if I try to define it, then what we have seen, सबसे पहला क्या आया, स्टिमुलस आया. स्टिमुलस क्या था हमारे प्रीवियस इमेज में, दैट वाज अ कैंडल. This stimulus was received by whom? It was received by the receptor. It was received by the receptor. Then this receptor had sent, has sent, or I can just write this way. Uh, this receptor has conveyed the message to the spinal cord. To the spinal cord. Fine. Now you tell me that between receptor and spinal cord, ये जो receptor से spinal cord तक messages transmit हो रहे हैं, ये किसने किया? ये हमारा sensory neuron perform किया. This was performed by the sensory neuron. Fine. Now spinal cord का काम क्या है? To process everything, to interpret everything. After interpretation, what will it do? It will actually convey the message to the effector muscle. To the effector muscle. Again, अब effector muscle तक पहुंचाने के लिए इन सारे messages को कौन responsible है? That is another kind of neuron which we called as motor neuron. We called it as motor neuron. Finally, this effector muscle, once it has received the stimulus, it will perform the action accordingly. ठीक है? So now the final response will be performed here. So this is overall the pathway. Okay, this is overall a pathway for reflex action. Pathway of reflex action. Fine, fine. Okay. Any confusion? Any doubts still here? Any doubts? Any confusion? One may ask. Fine. Okay. Now let's move to last thing of today's lecture. Difference between nerve and ganglion. हम लोग बहुत बार दो terms सुनते हैं, what are nerve, what are ganglion. Now many people confuse neurons and nerves that they are same thing, but they are not same thing. Neurons are what? Neurons are cells, small cells, and collection of neurons can make up the nerves. Okay. So what is nerve? हम लोग पढ़े थे that neuron has two parts, a cell body. न्यूरॉन के पास एक सेल बॉडी होता है, and there is a long tubular extension which we called as axon. This is the axon and this is the cell body, right? This is the cell body. Now what happens कि बहुत सारे हमारे बॉडी में एक न्यूरॉन तो है नहीं, बहुत सारे न्यूरॉन है. अब कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, अगर सारे बहुत सारे न्यूरॉन्स के बहुत डिफरेंट न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स को अगर हम लोग साथ में इस तरह से प्लेस कर दें, इस तरह से हम लोग प्लेस कर दें, तो ये जो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स है, this collection of axons is nothing but the nerve fiber. Okay, ये this picture has been taken exactly from your Selena book. This picture has been taken exactly from your Selena book. ये सारे क्या है? ये सारे हमारे हैं axons. ये जो bundles हमें दिख रहे हैं, these are nothing but the axons. Collection of axons. अलग अलग neurons के axons को collect किया गया है और इनको envelop किया गया है tubular sheath के around. ठीक है, अंदर, sorry, not around, अंदर. This has been enveloped with the help of a tubular sheath. Again, what is sheath? Sheet is something else. Paper, piece of a paper is sheet. But sheath is what? It is covering. ठीक है, what is it? It is a covering. और इस ट्यूबुलर शीथ के अंदर बहुत सारे कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स है. इसे इस पूरे बंडल को, दिस ओवरऑल बंडल वी आर गोइंग टू कॉल्ड इट एज अ नर्व
bundle. So what has been written here? This is bundle of axons. किसके bundle है? सेल बॉडी का नहीं. एक न्यूरॉन में एक सेल बॉडी भी होता है और एक्सॉन भी होता है. But we have discarded. We are not including the cell body. We are not including the cell body inside the nerves. Just the axons. Overall axons. The collections of axons all together inside a tubular sheath is called as a nerve. Okay, so bundle of axons of separate neurons, अलग अलग neurons के, enclosed in a tubular sheath. Fine, enclosed in a tubular sheath. Now what is ganglion? जैसे collection of axons को हम लोग nerves कहते हैं. बहुत सारे सेल बॉडी को, सेल के बॉडी को अगर हम लोग कलेक्ट कर लिए, एक्यूमुलेशन ऑफ सेल बॉडी या कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी को हम लोग गैंग्लियन कहते हैं. तो सेल बॉडी के इकट्ठे को, सेल बॉडी के एग्रीगेट को हम लोग गैंग्लियन कहेंगे. एंड नर्व हम लोग किससे कहेंगे? एक्सॉन्स के इकट्ठे को या एग्रीगेट को. ठीक है. सो दीज आर व्हाट, दीज आर एक्चुअली गैंग्लियन. दीज आर व्हाट, दीज आर सेल बॉडी, सेल बॉडीज, सेल बॉडीज ऑफ अ न्यूरॉन. ठीक है, काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है. सारे एक्सॉन्स को अगर हम लोग एक जगह पे कलेक्ट कर लिए तो नर्व बना देगा इनसाइड अ ट्यूबुलर शीथ. और अगर सारे सेल बॉडीज को, एग्रीगेट्स माने यानी कि इकट्ठे, एग्रीगेट्स का मतलब होता है इकट्ठे, अगर सारे सेल बॉडीज को एक जगह पे इकट्ठे कर ली तो वो क्या बनाते हैं? गैंग्लियन बनाते हैं. दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ गैंग्लियन. एग्रीगेट्स ऑफ सेल बॉडीज, नॉट द एक्सॉन्स, द सेल बॉडीज from which the nerve fiber may arise or enter into. Okay, the nerve fiber is made up of axons, bundle of axons that may arise or enter into. Okay, fine, fine. Okay, any doubt till here? Any doubt till here? No, ma'am. Okay, fine, fine. So I'm ending the lecture of for this chapter till here. This was the first part. Tomorrow we are going to divide the whole nervous system into three parts. That is, sorry, two parts. That is the central nervous system and the peripheral nervous system. And we are going to check with the anatomy of the brain and everything tomorrow. Okay, fine. If you like the classes, then you can subscribe to this channel. You can also hit the like button, and for all the updates you can hit the bell button. Sorry. So we are uh, trying to come live every day. Your physics classes uh, uh, are actually held every day, and on weekends you will be having your chemistry and biology classes. Fine. Now, after you watch this lecture, if you have any kind of doubt, any kind of queries, you can post your doubts in the comment section. We will definitely reply you back within 24 hours. Okay. Again, I'm telling this thing that after each chapter gets finished, we are giving you free mock test. For that, what you have to do, you have to download the app Midha Guru, and you have to log in into the app. Once you log in into the app, you can go to the search bar or the search button. There you can type for 10th ICC mock test. The mock tests are given in a very sequential manner so that it becomes easy for everybody to access all those things. Apart from that, if you have any kind of inquiries, any kind of mentorship or free guidance you need, you can call in this number. We have also a separate Telegram channel and WhatsApp channel where you can join and get to know about all the updates that is required for you. Okay, fine. Have a nice day. Let's meet tomorrow.